Yes, sir. Yes, sir. सो काली आमे देखिथिले टॉपिक जो आमर सिलेबस रे जहाँ देखिथिले बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन ऊपर देखिथिले आज देखिया सेपरेशन ऑफ पावर separation of power between various organs of the government and dispute redressal mechanism. सो ये सबू यारी भितर तुम सिलेबस मोनली मेनली यारी भितर सबू कौन कौन अच्छी सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली आम जो देखा कौन सो बेसिकली आमर मेन एम कौन ना ये रिलेटेड क्वेश्चंस कौन आसी आमे देखिबा कौन आसी आमे देखिबा कौन आसी पारे एवं कौन कौन इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जेमती लास्ट क्लास रे आमे देखिले कि रिलेशन बिटवीन जोटा कि फेडरल रिलेशन फिस्कल फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कंपैरेटिव फेडरलिज्म गवर्नर ये सब आमे लास्ट क्लास देखिले आज आमे देखिबा बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल मेकानिज्म सो सेपरेशन ऑफ पावर जो देखिबा कि या ऊपर कौन कौन आसी पारे सेपरेशन ऑफ पावर कहार सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली कहार सेपरेशन ऑफ पावर रिक्वायरमेंट कौन सो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर and judiciary executive functions कौन to implement the law legislature to make the law and judiciary to interpret the law so ये concept basically कौन आसिला मॉन्टेस्क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम ये concept आनी थिले गोटे फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम आनी थिले कि पावर भितरे पावर शुड बी चेक बाय द पावर अनलिमिटेड पावर कहा को दबा कथा नुह सो पावर must be checked by power must be checked by power ये किए कही मॉन्टेस्क्यू जने फ्रेंच फिलोसोफर एंड बहुत बड़ा दार्शनिक थिंकर्स जी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यहाँ बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस अच्छी फॉर द फर्स्ट टाइम से ये कॉन्सेप्ट देइथिले 1748 से गोटे ये लिखी गोटे बुक्स लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉ द स्पिरिट ऑफ लॉ से लिखी पावर मस्ट बी चेक्ड
by the power or to power. Power must be checked to power. Power को check करियो. So यही एरिया रे कौन कौन एरिया आसी पारे ए सेपरेशन ऑफ पावर रिलेटेड जो यही कॉन्सेप्ट अराउंड. सो जिते तुम या रिलेटेड किसी सेपरेशन ऑफ पावर भीतर कॉन्सेप्ट आसीबो तुम कौन करिवो. यू शुड फर्स्ट बेसिकली कोड्स टा लिखि दिबो. You write the quote, power must be checked to the power or checked by the power. So यहाँ पर linked questions कौन कौन है पारे जोटा कि area need to cover, area need to cover. यही जो आमर सिलेबस देखिले जो एरिया हमें टच करिया दरकार आमे एटा देखिले जानि परिबनी कि कोन को एरिया रो क्वेश्चंस आसी परिबो. बर्तमान मो डिटेल्स रे दे देबे तले आपण जानि परिबे कोन एरिया रे क्वेश्चंस आसीबो. सो फर्स्ट द वेरी इंपोर्टेंट वन इज द रिलेशन बिटवीन वेरियस ऑर्गन कोन रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव. ये है वेरी इंपोर्टेंट रिलेशन एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर रिलेशनशिप. यहाँ के भीतर रिलेशनशिप कौन रिलेशनशिप बिटवीन दिस वन लेजिस्लेटिव जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव. सेकंड वन इज चेक्स एंड बैलेंसेस. केमिति चेक करूची जेमिति लेजिस्लेटर गोटे लॉ बनेला किंबा एग्जीक्यूटिव गोटे लॉ को इंप्लीमेंट कला जदि से लॉ रो भूल अछि जुडिशियरी कोन करूची ताकू इंटरप्रेट करिकि से ताकू नल एंड वॉइड करूची. ता माने कोन इ चेक करूची एवं चेक करिकि बैलेंस करूची कोन ना एक्सेसिव पावर ऑफ द लेजिस्लेचर और एक्सेसिव पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ताकू सी बैलेंस को आणुची. सो गोटे बैलेंस वे रे रहिबा दरकार. पावर कहार एक्सेसिव पावर कहा पाखर रहिबनी. तो चेक्स एंड बैलेंस इज वेरी. सो चेक्स एंड बैलेंस केमिति करियो जणे हाउ चेक्स एंड बैलेंस बीइंग डन थ्रू जुडिशियल रिव्यू. ये जुडिशियरी थ्रू जुडिशियल रिव्यू. नंबर फोर्थ काउ कोन पारे जुडिशियल रिव्यू कांसेप्ट आसिला जुडिशियल एक्टिविज्म. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट वन. क्वेश्चंस आसुची एक्टिविज्म माने कोन केतले आसीबो एक्टिविज्म जेतले जुडिशियरी एक्टिवली समथिंग करिवो एक्टिविज्म. देन आउ कोन कांसेप्ट या रिलेटेड हे पारे सेइटु आउ गोटे कांसेप्ट आसिला जुडिशियल ओवररीच माने तांकर रीच रे आगो को पळेला माने से जुडिशियल रो काम खाली लॉ को इंटरप्रेट करिवा किसी जगह रे लॉ मेकिंग को पळेला या एग्जीक्यूटिव रो फंक्शंस को पळेला लॉ इंप्लीमेंटेशन को पळेला. तो सही समय कह जाए कि भाई ये ओवररीच करूची तार फंक्शंस जहाँ अच्छी ताठू अधिका से ऊपर को जाउची तार जहाँ काम से काम ठू अधिका किसी काम से करने को जाउची. देन ट्रिब्यूनल्स हला या रिलेटेड डिस्प्यूट रिड्रेसल जेमती ट्रिब्यूनल्स डिस्प्यूट रिड्रेसल जते आसीबो तते ट्रिब्यूनल आसीबो. तुमे जानि जो बहुत सारा ट्रिब्यूनल अछि महानदी ट्रिब्यूनल वगैरह में काली भी देखी थिले या ऊपर. देन आउ कोन हे पारे गोटे सैट and state administrative tribunal and national administrative tribunal national CAT central administrative tribunal आउडला state administrative tribunal. जेतले एडमिनिस्ट्रेशन भीतर किछि डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आसीबो सेतबेले ट्रिब्यूनल काम. देन ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल कौन कौन आमे पढ़ीचे पॉलिटी रे ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल.
देन आउ कोन पारे गोटे हला इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। सो ए एरिया को हम टच करिया अछि, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। ये एरिया तुम दरकार। आम जुडिशियल रिव्यू भी पढ़ुचु, चेक्स एंड बैलेंस भी पढ़ुचु, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, ट्रिब्यूनल, एडीआर एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। माने गोटे इंस्टीट्यूशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन तार अकाउंटेबिलिटी फिक्स करा जाए, जमीती एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को जुडिशियरी फिक्स करे। देन देखिबा कि इंडियन मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कौन रहे। यदि समस्ते क्लियर है, बुझा पड़ुची ना बुझा पड़ुनी? क्लियर अच्छा ना कि कौन किसी कार डाउट अच्छी तो पचारि देव। कौन इंडिया सेपरेशन ऑफ पावर जो कॉन्सेप्ट आसी थिला, ये सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट का पाखरु आस्थिला कहलो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे सेपरेशन ऑफ पावर का पाखरु आस्थिला ये कॉन्सेप्ट? के कहि परिबो? From where we got this concept, separation of power? USA. But USA follows strict separation of power. Strict separation of power. Does India follow strict separation of power? No. India does not follow. India does not follow strict separation of power. India does not follow strict separation of power. India follows functional separation. India follows functional separation. Functional separation plus checks and balances. This is a very important point. India follows functional separations plus checks and balances. We are not following the watertight separation as the USA is following. There is a watertight separation between executive, legislature and judiciary in USA. But same is not followed in India. In India, there is a mixed separation in case of judiciary and in case of legislature and executive. Same judiciary, same executive, same person become legislature. So there is absolutely no separation. But in case of judiciary, there is a separation, but not watertight.
executive, some amount of control is in the hands of the executive while appointing the judges. Okay, so ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର and salary perks basically depend on the parliament. ताମାନେ legislature rules ଉପରେ भी depend କରୁଛି କିଏ judiciary. So ସେଇଥିପାଇଁ Indian system organs जोटा कि executive, legislature and judiciary not watertight separation. These are functional separation. Functional separation केमिति आमे one by one देखिबा तार example कोन. तार example कोन, executive is a part of legislature. Executive is a part of legislature. Executive is a part of legislature. Judiciary और legislature पूरा इंडिपेंडेंट नुह. legislature मन इच्छा जहाँ चाहिए से लॉ बनै पारिबो नाही. So judiciary reviews the law. Judiciary reviews the law. So judiciary review करूची तो ला माने legislature independent नुहे. Similarly, president, executive president promulgates the ordinance. Promulgates the ordinance माने law. Ordinance माने law. Ordinance making power of the president. Article कहते कोई भी किए? Anyone? Ordinance making power of the president. Which article it is? Article 123. Ordinance में बनोजी माने ordinance is same power as law. पार्लियामेंट जो लॉ बनोजी तार जेमिति पावर ऑर्डिनेंस रो सेमिति पावर माने लॉ बनोजी पार्लियामेंट लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट माने नॉर्मली प्रेसिडेंट बनाती किए बनाती प्राइम मिनिस्टर आउ काउंसिल मिनिस्टर. ता माने एठी एग्जीक्यूटिव लॉ बनोजी. एग्जीक्यूटिव लॉ बनौसी एटी एग्जीक्यूटिव जो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एवं लेजिस्लेचर जदि लॉ बनौसी ताको रिव्यू करूची के जुडिशियरी. So there is a partial separation of power. That means India follows partial separation of power. Partial SOP, separation of power. Partial SOP. So यहाँ पर आउ टिके एलाबोरेटली देखिबा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन अच्छी. यहाँ पर एलाबोरेटली देखिबा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन. फर्स्ट पॉइंट देखिए कि लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशियरी. लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशियरी जार मझे मझे डाउट आसतो पचार थो. लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशियरी रे आमे करिवा आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. Article 121 of the Constitution कौन कहूची? Article 121 of the Constitution, what is it telling? कि Parliament cannot discuss the conduct of judges. Parliament cannot discuss the conduct of judges except impeachment. Judges except impeachment.
जजेस रो कंडक्ट पार्लियामेंट डिस्कशन हेई परिबो नाही। आर्टिकल 121 कहूची ता माने कोन कि जजेस रो काम को एठी तुमे क्रिटिसाइज करि परिबोनी या प्रशंसा करि परिबोनी। दैट इज एक्सेप्ट इम्पीचमेंट। आर्टिकल 121 कहूची आर्टिकल 121 जेमती पार्लियामेंट सेमिति आर्टिकल 212 121 आर्टिकल 2 ना 90 आर्टिकल 211 जेटी एठी पार्लियामेंट जेमिति एठी कौन हबो स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस एक्सेप्ट इट्स इम्पीचमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर भी या ऊपर डिस्कस करि परिबो नाही। एति पर समस्त क्लियर। यस सर। देन देखिबा जुडिशियरी वर्सेस एट देखले लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशियरी ता माने ये दिटा आर्टिकल लेजिस्लेचर किए थी ओवर द लेजिस्लेटिव बॉडी इज पार्लियामेंट हियर एठी स्टेट लेजिस्लेचर जेटी विधानसभा ये दी जन को ऊपर कोन रखला रेस्ट्रिक्शन लगेला कि तुम्हें पार्लियामेंट रे बसिकी या स्टेट लेजिस्लेचर बसिकी जजेस रो कंडक्ट ऊपर डिस्कशन करि परिबो नाही एक्सेप्ट इम्पीचमेंट। सर हाईकोर्ट आड़े करिबो। हाँ हाईकोर्ट बा जजेस माने जजेस ऑफ हाईकोर्ट रो भी तुम्हें डिस्कशन करि परिबो नाही। सडा देखले लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशियरी। एबे देखिए जुडिशियरी वर्सेस लेजिस्लेचर। जुडिशियरी वर्सेस लेजिस्लेचर। जुडिशियरी वर्सेस लेजिस्लेचर। आर्टिकल 122 आर्टिकल 122 122 कौन कहूची 122 माने का ऊपर थिबो जुडिशियरी ऊपर कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चंस पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट रे जहां भी किसी हो तो तुम्हें देखी थी थरे भोट नोट फॉर भोट केस माने पैसा एमती पार्लियामेंट रे फिंगा होतला बुझिबला नहीं तापर भी कोर्ट किसी कहि पालेनी काहे कि ना सेटा आउटसाइड द प्रिव्यू ऑफ द कोर्ट। पार्लियामेंट भितरे किंबा स्टेट लेजिस्लेचर भितरे कौन भी होउची कौन भी कहउचंती दे आर नॉट अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी दे आर नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू। सेइथिपई जुडिशियरी रो गोटिए जगह हाथ सेई कहना माना जाय कोन ना पार्लियामेंट इज सॉवरेन। विधानसभा जो कि स्टेट असेंबली इज सॉवरेन। सॉवरेन माने नोबडी इज अबव इट। ता भितर जा भी हबो केवल सेई माने ही ऑल पावरफुल। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन। सेम 122 जेमती रहिला 212 90 ऐड कर दबो। Court cannot question the proceedings of state legislature. State legislative assembly. State legislative assembly. जुडिशियरी भी किसी कहि परिबोनी तांको भितरे आमे देखले लेजिस्लेचर भी किसी जुडिशियरी ऊपर कहि पार। एगुडा मन रखले तुमे सेपरेशन ऑफ पावर को इजीली अंडरस्टैंड करि माने बुझेई परिबो। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल व्हिच इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशियरी किए कहि परिबो को आर्टिकल एटा
वेरी इजी वन डीपीएसपी अंडर अच्छी आर्टिकल 50 आर्टिकल 50 separation of judiciary from executive it is a part of basic structure of doctrine separation of judiciary from executive separation of judiciary from executive and this article is part of basic feature या basic structure of the constitutions and all you know the basic structure of the constitution विषय समस्त जानी थी वो very important one the most important judgment throughout the या को केतळे भूलिबो नाही आर्टिकल 50 को केतळे भी भूलिबो नाही ओके सो ये ऑर्गन्स भितर रिलेशन ये जदि तुमे जानी थिबो किछि आर्टिकल तुम इजी हो सब देखिबो कि जदि आर्टिकल 121 थिबो ताले एठी 190 ऐड कर दबो 90 ऐड कर देले कोन हबो 211 पार्लियामेंट हेले स्टेट लेजिस्लेचर हिजो ताको एक्स्ट्रा माइंड रो प्रेशर देकी मन रखिया दरकार नाही जेमती एटी 212 122 212 90 ऐड कर देलो 90 ऐड कर देले पार्लियामेंट जागर लेजिस्लेटिव असेंबली बट ए केस रे केवल एग्जीक्यूटिव आउ ये अछि का अंडर अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देन देखियो फर्स्ट देखिले हमें सेपरेशन इंडिया रो सेपरेशन देखिले देन देखियो चेक्स एंड बैलेंसेस इन इंडिया काली मु बहुत सारा क्वेश्चन दे दिले समस्त करिजो ट्राई करिजो करिया पे से क्वेश्चंस गुडा ट्राई करो से क्वेश्चंस बाहरु किछि आसीबोनी सेति को प्रैक्टिस करो से क्वेश्चन जदी करि दबो तुमे सब हेइ जिवो एटा को डिफरेंट वे रे मु काई पढौची तुमे पढिचो एटा पार्लियामेंट रे पढिचो आमे डीपीएसपी रे पढिचे जो सेपरेशन ऑफ पावर विषय रे बट क्वेश्चंस खाली सेपरेशन ऑफ पावर जतो आसीबो तुम पाखरे मटेरियल खाली नथिबो तुम भाबी परिबोनी जदी एई भलिया पढिथिबो तुम पाखरे ओटे मटेरियल थिबो सो किए कागु चेक्स करूची देखिबा वन बाय लेजिस्लेचर चेक्स एग्जीक्यूटिव legislature checks executive legislature माने लेट्स से एज्यूम करो एठी लेजिस्लेचर के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के प्रेसिडेंट वगैरह बट मोस्ट पावरफुल के प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर तो लेजिस्लेचर माने जे एमपी माने हाउ दे कंट्रोल थ्रू क्वेश्चन आवर हाउ दे चेक करिवे क्वेश्चन आवर क्वेश्चंस पचारिवे एग्जीक्यूटिव को भाई कोन एटा काई के हला कोन पई हला तुमे मन इच्छा केमती कर देलो क्वेश्चन आवर देन आउडे सुनिथिबो 0 आवर थ्रो तुम पचारि परिबो देन सबुठ इंपोर्टेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन you can ask through no confidence motion you can also put कहीं ना एवरी ईयर सीएजी रो काम होला तारो रिपोर्ट को सबमिट करिवो प्रेसिडेंट पाखरे और प्रेसिडेंट ताको पार्लियामेंट रे सबमिट करिवे तो सीएजी रिपोर्ट भी वेरी इंपोर्टेंट तुम्हें देखी थी वो सीएजी विनोद राय जे कि जो कोल घोटाला कथा अगर सब नहीं के आस्थिले ता ऊपर पार्लियामेंट रे बहुत बड़ चेक कराइतला सीएजी रिपोर्ट कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तार काम होला
कि कौटी कौन खर्च होइछि ठीक से हेइछि ना नहीं. देन थ्रो पार्लियामेंट्री कमिटीज. Through parliamentary committees. So ये सब मेथड, these are the method through रे legislature check करि परिबो. बर्तन आमे जे देखिबा एग्जीक्यूटिव केमि चेक करिवो. एग्जीक्यूटिव checks legislature. Executive checks legislature. कौन थ्रो रे ऑर्डिनेंस. प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बने देले, लेजिस्लेचर को पास कर देले ना. ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123. एग्जीक्यूटिव कौन करिवो. एग्जीक्यूटिव किए प्रेसिडेंट. बट प्रेसिडेंट ताको मन इच्छा तो करंतिनी. ये तांको किए कहबो प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल मिनिस्टर हेडेड हबो प्राइम मिनिस्टर. सो काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. सो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कबे कौन ना जेतो लेजिस्लेचर एग्री नथिबे एमान ताको बाईपास कर देबे. लेजिस्लेचर जदी पावरफुल हेथि एमान ताको बाईपास कर दे. देन सिचुएशन आसे लेजिस्लेचर पूरा ऑल पावरफुल हेले एग्जीक्यूटिव ये पावर अछि कोना डिसोल्यूशन ऑफ हाउस. डिजनेशन ऑफ लोअर हाउस. डिजनेशन ऑफ लोअर हाउस. सो ये एठी हेई परिबो डिसोल्यूशन करि परिबे. एंड केते केते वीटो पावर भी अछि एग्जीक्यूटिव पाखरे. प्रेसिडेंट पाखरे वीटो पावर थ्रो रे भी हेई परिबो. सो ये सब किसी जगह एग्जीक्यूटिव भी चेक करि परिबे लेजिस्लेचर पावर को. देन जुडिशियरी चेक्स. जुडिशियरी काम होला चेक करिवो कहा को. जुडिशियरी checks both legislature and executive. both legislature and executive. जेमती कौन चेक करिवो थ्रो केमती चेक करिवो जुडिशियल रिव्यू. थ्रो जुडिशियल activism. Through judicial review, through judicial activism या judicial overreach. ସେଇଠୁ ବେସିକାଲି ଏ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି. ସେଇଠୁ ଏ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି. देन आउ गोटे वेरी इंपोर्टेंट चेक्स करती सब गोटे हथियार भाया यूज करती कौन कौन कहल पीआईएल पीआईएल गोटे ये ता थ्रो जुडिशियल रिव्यू हुए. देन आउ गोटे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पीआईएल भी लिखिपार अलग भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन थ्रो रे तुम्हें कौन कर कंट्रोल कर कि भाई देखो ये इट इज kind of basic structure doctrine is something जोटा कि not defined and in define over the time. आज सुप्रीम कोर्ट को इच्छा है भाई देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अंडर आसुची एटा हार्म करूची सो आमे ताको नल एंड भॉइड कर दोचे. सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन गोटे ओपन पांडोरा बॉक्स भलिया सेइथरे यू कीप एडिंग द सब्जेक्ट व्हेनेवर यू वांट. तो सुप्रीम कोर्ट चाहिए सेटा सी करी पारिबो.
जो आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर सेटा को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अंडर आना गला टू प्रोटेक्ट लाइक इंपोर्टेंट जजमेंट मोटे बसी कहूँ इंपोर्टेंट जजमेंट जोटा कि तुम यूज कर आंसर रे फर्स्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट वन केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती केस 1973 हम्म सर हम ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେସ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିବା ତ ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ର ରେଜଲ୍ଟଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କେସ୍ଟା ଲେଖିଦେବି ତାର ଅପଡେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା केस लिख लो केस रो पुणी बेसिकली कौन जजमेंट अच्छी बेसिकली तार या रिलेटेड कौन जजमेंट अच्छी लेट्स से सेपरेशन ऑफ पावर ऊपर कौन जजमेंट अच्छी तो जमती तुमने केशवानंद भारती केस 1973 एथिरे प्रिंसिपल कौन सेट करथिला कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये सेट करथिला तो यार जजमेंट रो मेन बहुत सारा जिनस अच्छी जजमेंट रो बट सबुठु इंपोर्टेंट कौन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन नुआ जुडिशियल इनोवेशन एटा थिला सेटा कहबो एटा एटा तुमको बहुत सारा जगह तुम यूज कर परिबे एटा वेरी इंपोर्टेंट वन एथिरे कौन ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन रे सेपरेशन पावर को प्रोटेक्ट करा गला या पूर्व 1973 पूर्व ये कॉन्सेप्ट ही नथिला सेपरेशन पावर को जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन रे हटे हबो ना हटे हबोनी सेमति कि कॉन्सेप्ट ही नथिला तो सेपरेशन पावर को भी प्रोटेक्ट कला किए थ्रो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन रो जजमेंट तो इटा मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट एंड एटा को तुम ऑलमोस्ट एवरी आंसर यूज करि परिबो रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ आंसर रे जोंडे कि सेपरेशन ऑफ पावर तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू ये सब कांसेप्ट अनुसार तुम्हें ये जजमेंट को तुम्हें यूज करि परिबो सेकंड जजमेंट लेको इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस 1975 इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण सेठी जो बैलेंस कथा से कही से कही कि नो ऑर्गन कैन डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस 1975 से कही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थिला कि नो ऑर्गेनाइजेशन कैन डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी बैलेंस एमंग ऑर्गन्स इज एसेंशियल देखो बैलेंस एमंग ऑर्गन इज एसेंशियल देन तापर जस्ट 5 वर्ष पर आ गोटे जजमेंट से भी वेरी इंपोर्टेंट जजमेंट मिनर्वा मिल इन 1980 मिनर्वा मिल केस इन 1980 बेसिकली इट बेसिकली एंश्योर कला कि लिमिटेड एमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट लिमिटेड एमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट रो अनलिमिटेड पावर नहीं पार्लियामेंट चाहिए जहाँ चाहिए से एमेंड करि परिबो सेमिति नहीं पार्लियामेंट को भी एमेंडिंग करिवार ताकू लिमिट करा जाई परिबो ताकू प्राबंधी लगे हेबो ताकू रेस्ट्रिक्ट करि हेबो सो हियर ए केस रे कोन करा गला जुडिशियल रिव्यू को प्राइमेसी दिया गला पार्लियामेंट लॉ बनै परिबो बट से लॉ टाकू रिव्यू करिवार पावर
एवरी एलिमेंट जहाँ भी किसी थी कॉन्स्टिट्यूशन भितर इवेन इफ एटा 9th शेड्यूल भितर भी रहिला इवेन इफ एटा फंडामेंटल राइट्स रहिला भी तुम्हें जुडिशियल रिव्यू करि परिबो किए जुडिशियरी तो इट स्ट्रेंथेन्ड मिनरल मिल केस कोन कहला इट स्ट्रेंथेन्ड द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द जुडिशियरी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट देन वेरी रिसेंट जजमेंट याको केबे भूलिबनी एनजेएसी केस एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन ये गोटे बनाइथिला गोटे कमिशन जुडिशियली रो अपॉइंटमेंट पाई मोदी गवर्नमेंट जो प्रथम थर पे आस्थिला 2014 रे सेटा बनाइथिले से माने सो इथरे कोन हला रे 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हेतिला 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रो कोन हला ना से माने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करिकी गोटे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन बनै दिथिले एवं ता थ्रो रे से माने पूरा ऑल ओवर इंडिया रे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रो जजेस माने को अपॉइंटमेंट करिवार एवं सेही थरे गोटे जो कमिटी थिला से कमिटी रो जो मेंबर्स माने थिले से प्राइम मिनिस्टर वगैरह थिले एवं से जो कमिटी मेंबर चूज करिवे से कमिटी मेंबर रो जना पड़ुला कि एग्जीक्यूटिव रो इन्फ्लुएंस रहिबो व्हाइल मेकिंग ए कमिटी सेइथरे एग्जीक्यूटिव रो इन्फ्लुएंस रहिबो एवं सेइथि पई सेई जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन को कोन करला पार्लियामेंट जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट ताको स्ट्रक डाउन कला इन 2015 रे 2014 रो लॉ हेतिला एक्ट हेतिला 2014 रे 2015 रे ताको स्ट्रक डाउन करा गला 2015 जो स्ट्रक डाउन करा गला सेथरे सुप्रीम कोर्ट कोन कहला ना जुडिशियल इंडिपेंडेंस सेथरे सुप्रीम कोर्ट कोन कहला स्ट्रक डाउन करू कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस is part of basic structure of the constitutions. Judicial independence is part of basic structure of the constitution. This is very important judgment. जेतले भी जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट ऊपर किसी भी क्वेश्चंस आसे जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव ऊपर जहां भी किसी माने डिस्प्यूट आसे या लेजिस्लेचर भीतर भी आसे तुम्हें ये जजमेंट दबो कने लेटेस्ट जजमेंट 2015 जजमेंट सो एबे रिसेंट रो कोन इश्यूज अछि रिलेटेड इश्यूज कोन अछि गुडा जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच ये कांसेप्ट अछि ना नहीं जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच आमे जोने डिस्कशन करूथले सो जुडिशियल एक्टिविज्म कोन किसी एग्जांपल जो देखिबा ए रिलेटेड कोन हेची जुडिशियल एक्टिविज्म रे एनवायरनमेंट रिलेटेड रूलिंग्स रे हमें देखिछु कि जुडिशियरी आउट ऑफ द वे जाई कि से लॉ माने जजमेंट देछि एनवायरनमेंट रिलेटेड इलेक्टोरल रिफॉर्म ऊपर भी जुडिशियरी बेसिकली लॉ निजे जेमति लॉ बनिया को पड़े जेमति लॉ मेकर फंक्शंस को या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सी देन पॉलिसी इंटरवेंशंस सर जुडिशियल जो क्रिटिसिज्म रे हम देखि परिबा तो प्रॉब्लम हो सर कोन हला सर एटा वन तक को जुडिशियल क्रिटिसिज्म से समान ना ना प्रॉब्लम हो किसी प्रॉब्लम नहीं जुडिशियल एक्टिविज्म इज ए डिबेटेबल इश्यू ये सब होउछ एटा बहुत पुराना सो जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच सेथरे एग्जांपल्स कोन ना एनवायरनमेंट रिलेटेड रूलिंग्स हला इलेक्टोरल रिफॉर्म हला पॉलिसी इंटरवेंशंस हला ए केस रे सो ये यूज करिवो कि एक्टिविज्म तुमे ताको जेतबे जो इश्यूज अछि जो इश्यू पाई जेमते कि ताको क्रिटिसाइज कराइछि तुमे सेतले मेंशन करि परिवो जेमते कि एई एग्जांपल गोटा देली देन तापरे लास्ट रे तुमे पॉजिटिवली लिखि परिवो कि एक्टिविज्म प्रोटेक्ट्स द राइट्स Activism protects the rights of the individual. Activism को तुम्हें सपोर्ट करि पारो बट ओवररीच को यू कैन नॉट सपोर्ट ओवररीच माने तांकर जो लिमिट अछि से लिमिट रु बाहर को पळैबा
जो रिच अच्छी से रिच रु बाहर को पड़े जावा सेटा ओवर रिच सॉरी से तुम लिखि पारियो कि ओवर एक्टिविज्म प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल बट overreach may disturb the balance. Overreach may disturb the balance between the organs. सर जो वोटिंग राइट्स को जजमेंट आसला ताको कोन लिखिबे ओवररिच से होय सर जो वोटिंग राइट्स ऊपर आसला जजमेंट सर ओवररिच हिसाब लिखिबे भाई ना ना से जजमेंट कौन थिला से जजमेंट जोटा कि माने नेगेटिव वे रे थिला जोटा कि ओवरेज माने बुझ भल से ओवरेज माने समथिंग जोटा कि तांकर जो जुडिशियरी जो फंक्शंस ता बाहर को जीवा भोटिंग राइट्स ऊपर जो देइथला जो बेंगल कथा कहउछ तो बेंगल इलेक्शन पूर्व जो यस सर हाँ सेटा तो बेसिकली जजमेंट रो भूल कहि पारो सेटा ओवररीच नुहे ओवररीच हेइथिले सी बेसिकली आउरी कहिथन भाई जब इलेक्शन बंद करो तुमे बंद करिकी तुमे एमान को आगे पूरा देन पुरेकी तापर इलेक्शन करिवो ये पार्ट ऑफ एक्टिविज्म भी जाय ओवररीच नुहे जुडिशियरी काम ही से बेसिकली बट एठी ओवररीच नथिला एठी थिला कि भाई एरर इन जजमेंट कि जुडिशियरी हाउ कैन जुडिशियरी गिव दिस सच काइंड ऑफ जजमेंट ओवररीच माने तुमे बुझ कि जुडिशियरी ता काम न करिगी से लॉ को इंटरप्रेट न करिगी लॉ को बनेवा कथा कहूछ या लॉ को इंप्लीमेंट कथा कहूछ सेते बेले सेटा ओवररीच हे जिवो सर वो गाइडलाइन जारी कुछ से ऊपर कौन सेटा सम टाइप रे खई पारे ओवररीच दीज आर द बेसिकली केसेस हे पारे देन लाइक डिस्प्यूट रिड्रेसल मेकानिज्म जोटा कि सेकंड पार्ट ऑफ द सिलेबस में देखिले वर्षा होजी कि रे एठी वर्षा होजी सर वो सर से जेले जा वर्षा टे होबार थिला मानसून फाइनली आसिला मानसून न आसले बहुत ये हो ओके एटा वेरी इजी वन बट देखिवार अछि डिस्प्यूट रिड्रेसल मेकानिज्म डिस्प्यूट बेसिकली कहा का भीतर हुए तुम मो भीतर नुह डिस्प्यूट इज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट स्टेट वर्सेस स्टेट ए केस रे ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहा पाखर अछि ओरिजिनल जुरिडिक्शन सेंटर सुप्रीम कोर्ट Supreme Court. yes under article 131 then आउ कौन अच्छी सेंटर स्टेट है
स्टेट भितर देन आउ गोटे डिस्प्यूट हुए पीपल ये सिटीजन वर्सेस गवर्नमेंट सिटीजन वर्सेस गवर्नमेंट एक केस किए अच्छी ओरिजिनल जुरिडिक्शन का हाथ अच्छी ये भी सुप्रीम कोर्ट हाथ अच्छी कौन अच्छी थ्रो आर्टिकल 32 है ना नहीं रिट जुरिडिक्शन सो हाउ यू बेसिकली थिंक ये तुम्हें डायरेक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म तुम माइंड रखियो कौन डिस्प्यूट रिड्रेसल कहार डिस्प्यूट आगे जाने देखे कि डिस्प्यूट भीतर कहा भीतर देन से जो डिस्प्यूट अच्छी कहा कंट्रोल जाउछ सो सिटीजन वर्सेस गवर्नमेंट हेले आमे आर्टिकल 32 थ्रो रे जाउछु देन हाईकोर्ट जदि केस देखिबा आर्टिकल 226 से रीड जुरिडिक्शन एटा कौन कह जाए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मते कहलो गोटे इजी क्वेश्चंस अछि द रीड जुरिडिक्शन इज वाइडर इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रीड जुरिडिक्शन टा हाईकोर्ट काहे की व्हाई Any idea? जानना हाईकोर्ट पाखे डिस्क्रिशनरी पावर अच्छी हाईकोर्ट पाखे डिस्क्रिशनरी पावर अच्छी सी रिट टाक नहीं पारे न नहीं पारे बट मुझे ओरिजिनल जुरिडिक्शन रिगार्डिंग रिट कौटी अच्छी सुप्रीम कोर्ट पाखे सुप्रीम कोर्ट पाखे डिस्क्रिशन नहीं सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई द रिट इफ यू गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ रिट अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई यू बट हाई कोर्ट कैन डिनाई यू हाईकोर्ट तुमको डिनाई कर तुम्हें रिट फाइल कर ना नहीं या रिट को एक्सेप्ट कर ना नहीं ये डिनाई कर हाईकोर्ट देन ट्रिब्यूनल्स भी हेल्प करे कि डिस्प्यूट रिड्रेसल करने जमती मु कहली कैट सैट ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव आर्टिकल 323 ए बी ए कैटेगरी आसुंदी देन आउ गोटे वेरी इंपोर्टेंट तुम जानथिबो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केवल एनवायरनमेंट रिलेटेड एनजीटी कौन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल अच्छी को कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल अच्छी एनजीटी 51 अच्छी कौन आर्टिकल मेंशन अच्छी कि नेशनल देयर शुड बी ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये it functions under principle of natural justice it created by the act of the parliament and it is not mentioned in the constitution of India. It is not a constitutional body, it is a statutory body.
specially designed to deal with environment related disputes, and it functions in the principle of it functions under principle of natural justice. यार decision principle of natural justice accordingly functions करे. हाँ 48A या 323B या यार प्रिंसिपल अच्छी बट ता से मेंशन नहीं कि एनजीटी फॉर्मेशन हो या एनजीटी को सी पावर दौनी बुझिपारा नहीं एनजीटी को इट इज नॉट गिविंग पावर टू एनजीटी कैन डीपीएसपी इज नॉट बाइंडिंग मो आवाज शुभुच तो स्लो एबे शुभुची देख लो देन तापरे आर्मी रिलेटेड है आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल महानदी वाटर डिस्प्यूट है वाटर ट्रिब्यूनल ये सब अच्छी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ये सब तुम्हें पाई परिबो देन आउ कोन अछि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बेसिकली जो जेन्युइन मेथड अच्छी ता छड़ी के आउ जो मेथड जेमती आर्बिट्रेशन थ्रो रे सिमिलरली मेडिएशन कंसिलेशन लोक अदालत थ्रो रे लोक अदालत नालसा जानिच नालसा इज अ पार्ट ऑफ आल्सो एडीआर नालसा कौन कहलो एनीबॉडी सो ये सब मेथड कौन हम डायरेक्ट फॉर्मल मेथड को न जाइकी इजिली आम स्पीडी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हम स्पीडी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हम कॉस्ट भी कम पड़ो लॉ कॉस्ट ना ये सब मेथड भाई कथबार्ता करी मामलाटा को आ गए जो पेंडेंसी ऑफ केसेस अच्छी ताकू कम करवा रिड्यूस हो पेंडेंसी ऑफ केसेस रिड्यूस हो तो यहाँ बेनिफिट्स अच्छी लोकपाल लोक अदालत लोकपाल लोकायुक्त ये तो काम करूनी बना किसी गोटे भी केस जाऊनी पाक लोकपाल
लोकायुक्त। बेसिकली मेनली यांकर फंक्शन कौन एंटी करप्शन एंटी करप्शन रिड्रेसल मैकेनिज्म एंटी करप्शन रिड्रेसल मैकेनिज्म लोकपाल और लोकायुक्त। Acts as a accountability mechanism. Acts as a accountability mechanism. Acts as a accountability mechanism. Then grievances redressal institutions, किछि grievances redressal institutions अच्छी like RTI through रे grievances redress करी हबो। consumer courts RTI consumer courts human right commissions ह्यूमन राइट कमीशन ये है ग्रीवेंसल रिड्रेसल इंस्टीट्यूशंस या थ्रू रे आमे हमर रिड्रेसल को सॉल्व करि परछु। रिड्रेसल इंस्टीट्यूशंस देन किछि आमे PYQs देखिबा। PYQs are very important. मैं try to solve this. देखो discuss the constitutional significance of judicial review. Discuss the constitutional significance of judicial review. So basically कौन ना एटा judiciary versus legislature. जुडिशियरी वर्सेस लेजिस्लेचर तापर लिखिबो। देन नंबर 2 जुडिशियल लेजिस्लेशन judicial legislation is antithetical to judicial legislation is antithetical to separation of power. Separation of power, discuss. These are UPSC questions. Judicial legislation एटा 2014-15 आसीथिला जोटा कि जते एनजेसी वगैरह इशू थिला। जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल माने ऑपोजिशन, अनइक्विवोकल ऑपोजिशन
अनइक्विवोकल ऑपोजिशन 2014 रे आस्थिले एटा 2013 रे सब एरिया टच हो तुम पीओक्यूज करदेले सब एरिया टच हो discuss the role of PIL public interest litigation discuss the role of PIL public interest litigation in judicial activism discuss the role of PIL public interest litigation in judicial activism basically main एठी कौन surrounding PIL जानिबो आउ judicial activism सही अराउंड रहिबा बेसिकली judicial review रु 2015 आस्थिला 16 आस्थिला एटा 2016 UPSC जतिय क्वेश्चंस जो एरिया को टच कर दे तुम सब क्वेश्चन ता भीतर आसीबो डिस्कस या एग्जामिन द रोल ऑफ ट्रिब्यूनल्स examine the role of tribunal in dispute resolution examine the role of tribunal जा ट्रिब्यूनल्स अच्छी मु कही examine the role of tribunal in dispute resolution very important मैं एतियो क्वेश्चंस कर दियो से एरिया टॉपिक कवर हो जिवो लेखो whether judicial activism leads to judicial overreach whether judicial activism leads to judicial activism जो judicial overreach होची next questions do you think judicial overreach same questions do you think judicial overreach undermine parliamentary sovereignty do you think judicial overreach undermine parliamentary sovereignty parliamentary sovereignty एटा भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एबे हमें लास्ट पार्ट देखिले द पेंडेंसी ऑफ केसेस affects justice delivery the pendency of cases affects justice delivery suggest reform जो मु एबे डिस्कशन कलु आमे एडीआर एगुड़ा सब कहली पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिड्रेस करिवो चाहे
आरटीआई रिलेटेड हो ताको रिड्रेस करियो इंस्टीट्यूशंस ता थ्रो रे हमें करि परिबा इंफॉर्मेशन आइगी एतिके कर दियो क्वेश्चंस सेम बेसिकली तार आंसर सेम अब एठी को लेखो एग्जामिन द नीड examine the need for strengthening ADR mechanism. Examine the need for strengthening ADR mechanism. नालसा फालसा भी एथरो इंक्लूड करिवो ना लास्ट ला evaluate the importance of judicial independence in democracy. evaluate यहाँ पर न्यूज थला से समरे evaluate the importance of judicial independence in democracy. Judicial independence in democracy. Evaluate the importance of judicial independence in democracy. सो गोटे मुझे ये सब क्वेश्चंस देख पूरा सब एरिया जो एरिया मु कही सब एरिया को टच करके क्वेश्चंस अच्छी ना नहीं यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी एरिया आई हैव टच्ड एवं एई एरिया रो क्वेश्चंस तुम जदी करि देलो ये पार्ट दीटा पार्ट मुझे काली जरूरी करली आज करली वेरी इंपोर्टेंट पार्ट एवरी ईयर ओपीएससी रे क्वेश्चंस आसुची ये दीटा पार्ट रो दीटा क्वेश्चंस आसुची या अधिका भी केते केते पकि देबी कॉन्फ्लिक्ट जतले रहउची अधिका जदि गोटे गोटे एग्जांपल खाली दे गोटे सेपरेशन ऑफ पावर जदि ऊपर गोटे क्वेश्चंस आसिला सेपरेशन ऑफ पावर ऊपर क्वेश्चंस आसिला तुम इंट्रोडक्शन केमति लिखिबो सेपरेशन ऑफ पावर तो गोटे इंट्रो लिखिबो केमति लिखिबो लेखो सेपरेशन ऑफ पावर इज द इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन सेपरेशन ऑफ पावर इज ए इंस्टीट्यूशनल लिखी दिया टिके हेल्प करियो इज एन इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ separation of power is the institutional foundation of constitutional democracy institutional foundation of constitutional democracy which ensure accountability liberty and prevention of authoritarianism then तापरे मॉन्टेस्क्यू जो कोट कहली मॉन्टेस्क्यू कोटटा एठी लगे देबो चिपके देबो पावर शुड बी कंट्रोल्ड टू पावर या पावर मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय पावर ये लिखि देबो देले से खुशी हे जिवो देन सेपरेशन ऑफ पावर जतो लिखिबो बॉडी पार्ट रे सबले कोन करिवो बॉडी पार्ट रे सबले इंक्लूड करिवो जहा जहा लिखिबो सेथरे आर्टिकल 3-3टा 2-3टा लिखिबो आर्टिकल कौन 50 द मोस्ट इंपोर्टेंट वन आर्टिकल 50 लिखिबो आर्टिकल 121 122 ये सब आर्टिकल मेंशन करिवो आर्टिकल 32 जोटे कि रिट ये सब कथा मेंशन करिवो
सो सब दब इंपोर्टेंस क्या दब कि प्रिवेंशन बेसिकली कौन कौन इंपोर्टेंस दब से बॉडी पार्ट तुम लिखो कि इट प्रिवेंट्स प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर इट प्रिवेंट्स और prevents concentration of power prevents concentration of power separation of power है गोटे पाखरे एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ये पॉइंट सब माइंड रखिबो prevent concentration of power तापरे कहली strengthen democracy strengthen democracy strengthen democracy এই গুলো পয়েন্ট গুলো एग्जामिनर খুঁজিব तुमको एग्जामिनर এই পয়েন্ট গুলো খুঁজিব protects liberty ensure accountability protects liberty ensure accountability ये वर्ड गुला तुम लिखियो तुम से खुशी हो accountability देन ताको स्ट्रेंथन करिया पई तुमे कोन कहइबो कि भाई स्ट्रेंथन एडीआर करो जुडिशियल रिफॉर्म करा जाऊ पॉजिटिव वे रे जदी लिखियो चाहिबो कि भाई ये इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रेंट होवा दरकार जे जार लिमिट रहय दरकार इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रेंट माने एटाको सॉल्व करिया पई कोन कोन आमे पदक्षेप नै परिबा स्ट्रेंथनिंग एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन देन जुडिशियल रिफॉर्म ट्रिब्यूनल ऑटोनॉमी जुडिशियल रिफॉर्म ये सब किसी पॉइंट तुम्हें ऐड करि परिबो मु जिस्ट ता कहि देली देन फाइनली गोटे कंक्लूजन एई भला माइंड मैप करि कि तुम लिखि परिबो तुमरो मन रखि परिबो ओके माइंड मैप कर कंक्लूजन लिखिबो ए हेल्दी डेमोक्रेसी A healthy democracy depends on not yet a healthy democracy depends not on supremacy of one organ. A healthy democracy depends not on supremacy of one organ. Supremacy of one organ. Not depends on supremacy of one organ but on constitutional balance but one organ but on constitutional balance on constitutional balance on all organ balance among all organs. ओके ये कंक्लूड करके तुम्हें छाड़ी लो सो मुझे जो पॉइंट कहली जो आर्टिकल कहली जो थिंकर्स कहली जो टर्म्स कहली जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हैला या कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस हैला किंबा रूल ऑफ लॉ चेक्स एंड बैलेंस जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी ओके सेपरेशन ऑफ पावर ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट जदी माइंड रखि थिबो गोटे लिखि दियो ताको नोट्स करिकी यू विल गेट गुड मार्क्स आंसर केमिति होबा दरकार आई थिंक तुम रियलाइज करि परथुबो जहा पढुचो सेहा एज इट इज लिखि परिबो नाही यू हैव टू बी हैव सम काइंड ऑफ प्रॉपर आर्टिकुलेशन ऑफ नॉलेज खाली नॉलेज जानिले आंसर लेखा हुए नहीं बुझला नॉलेज को केमती आर्टिकुलेट करिवो इन ए वे दैट बेसिकली looks better and looks organic
सॉरी ऑर्गेनिक हो ऑर्गेनाइज्ड okay. So these are things you can then now kali kale gote nebi mu aji koi debi to then ye complete heji ba tumaro ye part ta right etik thao aji thank you guys, thank you for watching, god bless you all, jai jagannath, namaskar.